Good afternoon, everyone. Let the other students join. Let's wait for one more minute and then we will start our class. Meanwhile, if you have any query, you can type in the comments. Okay, so now we can start our class. This is the very first class on our YouTube series, and this is the CSAT introduction. Today we will not discuss about the detailed content, but we will discuss about the exam. So you guys comfortable in English or you want the class to be in the bilingual? Anyone please reply and comment. Should I start the class? Okay. Okay, let's start the class. So we will start our class by solving a question. The question says in a CSAT exam that is comprising of 80 questions. If a student attempt 55 questions out of 80, if a student attempt 55 questions out of 80, then what are the minimum number of questions out of 55 he or she has to attempt correctly in order to qualify the exam? As we all know, the cutoff is 66 marks for CSAT, and for every correct answer, the student is awarded 2.5 marks and 1/3 negative marks for every incorrect answer, and there is no penalty for unanswered question. Anyone want to try this question? Okay, so
So let's try to solve a simple question first. The simple question is, the exam is same CSAT exam, and this time instead of solving 55 questions, he attempted all 80 questions. And out of 80 questions, how many he has to attempt correctly in order to qualify the exam? Again, the cutoff mark is 66 marks and 2.5 marks for correct answer and 1/3 for negative answer, and no penalty for unanswered question. So before we go to solve this question, let's do exercise. Suppose if you are sitting in the CSAT exam, according to you, what is the minimum number of questions you think you can attempt wrong? Do reply in the comments. And again, the if you have to look to the exam in another way, the question should be, what is the minimum number of questions you have to attempt correctly to qualify CSAT exam? Okay, so on an average, people answer this question very differently. Some says like we can afford to do the 10 questions wrong, or we can afford to wrong 15 question wrong. And if you attempt this question in a reverse way, that what is the minimum number of questions you have to do it right in the exam, these questions actually don't make any sense unless you have this data. What is this data? This data is about what is the number of attempts you have, like where the very first question we have, in which we attempted 55 question out of 80. If someone is attempting 55 question out of 80, then he or she has to correct 34 questions right. And in the second question, when I said if someone is attempting 80 question, then he or she has to attempt 40 questions right. How we are getting to these numbers? We will look into the question solution after this slide. So the important point is, if we attempting 55 questions and we are attempting 34 questions right, then we are scoring 67.50 marks. And if we are attempting all the questions, then we are getting 66 marks. We are just, in all these scenarios, we are just qualifying the exam. So how many questions you can afford to go wrong to qualify? As someone said in the class, that we need to attempt 10 questions correctly. If you need to attempt 10 questions correctly, then what is the ratio? Then you must attempt at least 40 questions. If you are attempting 40 questions, then you can afford to go wrong in the 10 questions. Then you have to attempt 30 questions right. But this is the scenario when we have 75% accuracy. Since in the examination we cannot decide how many questions we are attempting correctly or wrong. This data is known only after answer key. But this is something we can find out what is our accuracy, because accuracy is something which will not change overnight. If you are having accuracy of 50% or like 60%, then overnight you cannot go to the accuracy of 20%, or you cannot just rise to the accuracy of 90% overnight. So what you need to do, you need to just find out your accuracy.
and majority of the students lie in the this range from 60 to 75%. So if you are having accuracy of say 66%, this is a very good accuracy. If you are attempting 66% of questions with accuracy, then in order to qualify, you have to attempt 50 questions. Then we can go beyond right and wrong, and what we need to do, we need to find out our accuracy, and then we need to attempt number of questions according to our accuracy. So the very first task we should have is to find out our accuracy. So because if we are able to find out our accuracy, then we can find out what is the minimum number of attempts I have to do it. See, suppose my accuracy comes out from 66%, then I know before giving the examination, before going in the examination hall, that I need to attempt at least 50 questions anyhow to qualify. So that's how you will decide how many attempts you should have in the question paper. Because since this is not a relative exam, your marks are judged in the absolute terms. That's why you must know what is the minimum number of attempts you have to give in the exam. So what is the first exercise? We have to find out the number of we have to find out our accuracy. So if we find out our accuracy, then how we can find out our accuracy? There are 4 methods to find out. So the first thing is test series. You guys go under many test series and you practice problems, and while practicing problems, at least solve 10 questions on a slot. If you have solved 10 questions on a slot, only then you go. Only then you should go to teach. Okay, so and PYQ questions and other exams and practicing guesses. तो हम लोग का कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को अगर अपनी एक्यूरेसी फाइंड आउट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग अगर अपनी एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर लेंगे, तभी हम लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को अपने को रिलेट कर पाएंगे कि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना करना है. क्योंकि सबसे बड़ा डाउट लोगों को यही रहता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज टोटली पर्सनल, एंड जो डिपेंड करेगा वो केवल डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है. आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स कम हो जाएंगे, और एक्यूरेसी आपकी अगर खराब है तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाने होंगे. अब ठीक है, एक्यूरेसी तो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे जो मेथड्स मैं बताया हूँ. कि फर्स्ट मेथड इज टेस्ट सीरीज बाय गिविंग वेरियस टेस्ट सीरीज. एज इफ यू एनरोल इन आवर प्रोग्राम यू विल गो थ्रू मेनी टेस्ट सीरीज, एंड इफ यू कैन ज्वाइन एनी अदर टेस्ट सीरीज ऑल्सो. तो एंड अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार में ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर देखा. ऑनेस्ट 10 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है, और 10 में देखना है कि अगर मेरे 7 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो मेरी 70% एक्यूरेसी है. इस तरीके से क्या है कि ओवर द टाइम हम लोग को अपनी एक्यूरेसी जज करनी है, और थोड़ा बहुत एक्यूरेसी इंप्रूव होगी अगर हम लोग उसको ट्रैक करने लगेंगे कि मेरी एक्यूरेसी का कर्व कैसे जा रहा है. रेस्ट हम लोग कभी भी PYQ करें या अदर एग्जाम पेपर्स करें तो भी हम लोग को अपनी एक्यूरेसी को ट्रैक करना होगा. ठीक है, इससे हमें और अगर आप लोग की अप्रोच ये है, कुछ लोग की अप्रोच रहती है कि एग्जाम पेपर में गैसेस मारते हैं कि अगर सपोज 2 ऑप्शंस बचे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग द आंसर, दे टेक ए ट्राई. सो अगर ये चीज एग्जाम में करने वाले हैं तो ये चीज प्रैक्टिस में भी करना. जब टेस्ट सीरीज करो तो भी ये चीज करना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो तो भी ये चीज करना कि गैसेस मारना, अदरवाइज गैसेस को अवॉइड करना, ताकि एक्यूरेसी जो आए वो एक्चुअल एक्यूरेसी आए, नहीं कि आइडियल एक्यूरेसी. सेकंड चीज क्या है कि अगर मेरी एक्यूरेसी पता चल गई, लेट्स से कोई स्टूडेंट है जिसकी एक्यूरेसी 52% है, तो 52% एक्यूरेसी में मुझे 75 क्वेश्चन ठीक करने होंगे. इस 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कंटेंट जानना होगा. उसके लिए हम लोग क्या अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट देखेंगे, और कंटेंट को के हिसाब से हम लोग अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाएंगे. जो क्वेश्चंस को UPSC कवर करता है जनरली, वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. तो
अब हम लोग का जो कोर्स प्लान है वो क्या है कि सबसे पहले हम लोग सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर वाइज, जो मैथ के क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज करेंगे जहां हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर होगा। फर्स्ट हम लोग का पीवाईक्यू करने के पीछे अप्रोच का रीजन ये है ताकि हम लोग को पता चले कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, बिकॉज यूपीएससी इज अ वेरी वास्ट, वो सॉरी एप्टीट्यूड इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। हम लोग किसी भी लेवल पे एप्टीट्यूड को पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें किस लेवल का एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है वो हम लोग को पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। देन हम लोग सेम अप्रोच को यूज करेंगे रीजनिंग में कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग चैप्टर वाइज रीजनिंग करेंगे। अब आप लोग का जो पहला असाइनमेंट है वो कि आप लोग को जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट, उन लोग को अपनी पहले एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है कि एक्यूरेसी कितनी है आपकी, 60% है, 70% है, या जो भी एक्यूरेसी उससे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पता चलेगा और वहां से आपको पता चलेगा कि आप क्या स्किप कर सकते हो या कोई टॉपिक स्किप कर सकते हो या नहीं, या आपको पूरा कवर करना होगा। तो आपका असाइनमेंट तो यही रहेगा। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो था क्लास का, कि अगर कोई 80 क्वेश्चंस में से लेट्स से कि 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है तो उसको मिनिमम कितने क्वेश्चन ठीक करने होंगे। लेट्स से कि उसको x क्वेश्चन ठीक करने होंगे, 80 में वो x क्वेश्चन करेक्ट करता है तो रॉन्ग कितने करेगा, 80 माइनस एक्स। अब उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा, अगर उसके x क्वेश्चन करेक्ट है, अगर x क्वेश्चन करेक्ट है तो उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 2.5। अब रॉन्ग करने पे मार्क्स तो डिडक्ट होंगे, तो उसने कितने क्वेश्चन रॉन्ग करे, 80 माइनस एक्स, और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये हमने हमारे जो मार्क्स डिडक्ट होंगे वो होंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 3। अब उसका जो टोटल मार्क्स है वो हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 66। यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे और x का जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 40। क्लियर है? तो फर्स्ट क्लास हम लोग की यहाँ पे ही है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम लोग इसको रेगुलर क्लासेस में इसको डिस्कशन करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और पहले जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2022। इस क्वेश्चन पेपर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाई 1, जो भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। If anyone have any query, they can ask in the comment section. Or you can join the, or you can just personally message me on WhatsApp with your queries and we will solve the questions there. Thank you very much.